हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक तो मैं अपने लाइव सेशन को शेड्यूल नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से काफ़ी लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट एनीवे, बाद में भी इन वीडियोस को देखा जा सकता है और काफ़ी लोग देखते भी हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के साथ जो इशू चल रहा है शिपिंग बिल क्लोजर का या ईडीपीएमएस वाला। तो क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है? शिपिंग बिल क्लोजर को अवॉइड किया जा सकता है क्या हम यूएसए में अगर एलएलसी ओपन कर लें तो? क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक ने कमेंट भी किया है कि हम यूएसए में एलएलसी ओपन कर लें तो क्या सही रहने वाला है। क्या हम अपने ईडीपीएमएस के जो इश्यूज हैं या फिर शिपिंग बिल को क्लोजर को लेकर जो चल रहा है बैंकर्स के साथ, उससे बचा जा सकता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो बच जाएंगे कि मतलब नंबर ऑफ शिपिंग बिल कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ही एंटिटी को जो यूएसए में एलएलसी बनाएंगे आप उसको भेजेंगे और फिर यूएसए को आप एज ए सेलर्स रजिस्टर करेंगे मार्केट प्लेसेस पे लाइक अमेजन पे। फिर अमेजन क्या करेगा, आपका यूएसए की एंटिटी को ही वो अपने रिकॉर्ड में दिखाएगा और वहाँ से वो दिखाएगा कि आप यूएसए के अलग अलग स्टेट्स में सेल कर रहे हैं। राइट, यही है मेरे ख्याल से जो प्लानिंग है वो तो यही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वहाँ से यूएसए की एलएलसी से यूएसए के डिफरेंट स्टेट्स में बेचेंगे सामान को थ्रू अमेजन, थ्रू एनी मार्केट प्लेस, तो वहाँ पे सेल्स टैक्स का लॉ है जो ये कहता है कि अगर आप मार्केट प्लेस को यूज़ करके B2C ट्रांजेक्शन करते हैं, मार्केट प्लेस को यूज़ करके अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे सेल्स टैक्स कंप्लाइंस ड्यू हो जाएगा आपके ऊपर, आपकी एलएलसी के ऊपर। और वहाँ पे सेल्स टैक्स का लाइक जीएसटी जैसा नहीं है कि जीएसटी में, अब इंडिया में क्या है कि एक ही जगह हम जीएसटी ले लेते हैं और फिर पूरे देश में अपने सामान को हम बेच सकते हैं। बट वहाँ ऐसा नहीं है। अगर मार्केट प्लेस के थ्रू आप डिफरेंट स्टेट्स में करेंगे तो डिफरेंट स्टेट्स में आपको सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना होगा और आपको रिटर्न की भी कंप्लाइंसेस करनी होगी। मतलब कि वहाँ पे फिजिकली लोकेटेड तो नहीं रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, क्योंकि मार्केट प्लेस के थ्रू हम बेच रहे हैं तो, लेकिन उसमें एक उनका एक लॉ है इकोनॉमिक नेक्सस का। मीन्स कि अगर आप इकोनॉमिकली किसी स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो इकोनॉमिक नेक्सस आप को चेक करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक नेक्सस का मतलब ये है कि उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि आप उस स्टेट के साथ कितना काम करेंगे, कितने अमाउंट तक, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आप सेल्स टैक्स से बच सकते हैं। मेजरली स्टेट में अगर आप 200 से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किसी भी स्टेट में करते हैं यूएसए के, तो इकोनॉमिक नेक्सस ब्रीच हो जाता है और आपको फिर उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको सेल्स टैक्स पे नहीं करना है, बट सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स की रिटर्न की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेल्स टैक्स कलेक्ट करके सेल्स टैक्स पे करने का जो काम है वो मार्केट प्लेसेस का है। तो जो यूएसए के जो मार्केट प्लेस है, मतलब लाइक अमेजन है, वो सामान बेचेगी डिफरेंट स्टेट्स में, टैक्स भी कलेक्ट कर लेगी और गवर्नमेंट को या स्टेट डिपार्टमेंट को टैक्स रिमिट भी कर देगी। बट आपके पास जो कंप्लाइंसेज है वो तो आ ही जाएगी सेल्स टैक्स, और वो ज़्यादा कॉस्टली है। वो ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा कि हर राज्य में चेक करना इकोनॉमिक नेक्सस 200 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए या नहीं हुए। और कुछ राज्यों में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ साथ एक अमाउंट भी है लिमिट की, अगर चलो $1 लाख है किसी में, तो उस टाइप से अगर जिसमें $1 लाख की लिमिट है वहाँ तो बच सकते हैं, क्योंकि इतनी सेल पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जहाँ 200 का है वहाँ तो हम इजीली पहुँच जाएंगे। राइट, तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। हाँ, लेकिन इसमें ये है बेनिफिट
कि आप अपने ही एंटिटी को भेजेंगे, इंडिया की एंटिटी से यूएस के एलएलसी को भेजेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ शिपमेंट कम होगी। या मतलब आप एक बार में ही बल्क शिपमेंट भेज देंगे, है ना, अपनी ही शिपमेंट, और आपकी ही जो कंपनी एलएलसी होगी यूएसए की, वो आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देगी, तो ये पेमेंट को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप इजीली बैंक को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई ये देखो ये शिपमेंट है, क्योंकि शिपमेंट में शिपिंग बिल में आपकी कंपनी का नाम होगा, एलएलसी का नाम होगा, और पैसा भी एलएलसी से ही आएगा। तो आप इजीली बता सकते हो शिपमेंट भी इसी कंपनी को है, पैसा भी इसी कंपनी से आई है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर क्लोज करने में। लेकिन ये सब डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना होगा कि क्या हम एलएलसी यूएसए में बनाना हमारे लिए सही रहेगा, या फिर क्या वो कॉस्ट बेयर कर पाएंगे जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का होगा, रिटर्न्स का होगा, क्या वो कंप्लायंसेस हम कर पाएंगे, या फिर कि यहाँ से अगर हम अ, अपने जो बैंक के साथ जो अपने इश्यूज चल रहे हैं, बैंक के साथ जो लाइजनिंग प्रॉब्लम है या फिर जो कॉस्टिंग प्रॉब्लम है, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वेट कर लेते हैं, अगर किसी और को कनेक्ट करना होगा तो। अरे भाई, सेल्स फ्री स्टेट भी लाइक टेक्सास एंड डेलावेयर, अलास्का, सिर्फ 4 स्टेट हैं जिसमें सेल्स टैक्स नहीं है। बाकी आपको अगर उन्हीं 4 में सेल करना है तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, फिर तो आप बच गए कंप्लायंस से। बट आपको देखना होगा कि हाँ, उस 4 स्टेट से अगर बाहर है तो सेल्स टैक्स से कंप्लायंसेस आएंगे। जी प्रीति जी, हेलो। कोई क्वेरी है तो और बता सकते हैं। मैं एक्चुअली यूएस के 35 स्टेट्स में सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। यस बैंक इंडिया चार्जिंग 1500 पर शिपिंग। हाँ, बैंकों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आरबीआई की तरफ से कि आप कितने चार्जेस लेंगे या नहीं लेंगे। अभी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया कि भाई $1000 से नीचे जो शिपिंग बिल है उसको आप क्लोज कर दो, बट उसमें भी क्लियर नहीं बताया उस नोटिफिकेशन या उस लेटर में कि चार्जेस कितने होंगे। अभी भी इशू तो वही है कि चार्जेस कितने होंगे। कुछ लोगों ने कॉल करके मुझे बताया भी है कि चार्जेज, मतलब कुछ बैंक हैं जो ₹100 या फिर ₹200 लेके भी शिपिंग बिल क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें बैंक से नेगोशिएट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ शिपिंग बिल्स हैं, ये सब। बैंक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक। आई हैव मोर देन 1000 शिपिंग बिल बट इट्स नॉट शोइंग इन ओपन स्टेटस ईडीपीएमएस में। अभी क्या है कि कई लोगों के सारे शिपिंग बिल रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं ईडीपीएमएस में। कुछ स्टे जो पोर्ट है उस पोर्ट से ईडीपीएमएस में डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ है, इस वजह से ईडीपीएमएस के उस शीट में नहीं हो रहा है। बट एट लेटर स्टेज इट विल रिफ्लेक्ट, not it is not showing right now, but you will get some notification from bank at later stage that these are the shipping bill now showing under your EDPMS, because it's just started working on the e-commerce exports also, so you have to keep the details. And भाई मेरा पेमेंट पैनल में आएगा, अमेजन में सेल हो रहा है, FBA किया है क्या, कोटक बैंक पायनियर का FIRC से BRC देगा। FIRC तो काम कर सकती है, लेकिन कोटक बैंक के पास वो NEFT के फॉर्म में पैसा आएगा, क्योंकि पायनियर तो आई थिंक कन्वर्ट करके कोटक बैंक को देगा। तो कोटक बैंक आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग के, हो सकता है वो IRM क्रिएट कर दे, कई बैंक तो कर देती है, कोटक भी कर सकती है। वो IRM जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो फिर शिपिंग बिल क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो उनको, कोटक बैंक को अगर IRM क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत है। आपको एक बार वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई क्या इससे कर दोगे। जस्ट सेकेंड, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आई नीड टू कीप फॉर शिपिंग बिल क्लोजर।
शिपिंग बिल क्लोजर के लिए जो बीआरसी का एक एप्लीकेशन होता है, जो किसी बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, that bank will share that covering letter, and you have to submit your invoice, shipping bill, and transport document like airway bill or courier bill, and the payment receipt, proof of payment receipt, that these are the payments received against the shipping bill, and you have to prepare a reconciliation also, that these are the shipping bills and these payments will match that against those shipping bills, because they will face the problem in matching those shipping bills with your payment details. So you have to prepare for that also, because bank will ask that these are the payments, now you have to reconcile those payments with your shipping bills. Their major issue in e-commerce exporter, that they can't reconcile their payments with shipping bills. Which bank charges less money for closure? It is still under debate, because I got some calls that IndusInd Bank charges very less amount, like 100 or 200, but they have different accounts opening options there. Like they have the account opening with the accounts having 5 lakh minimum balance, they will charge lesser amount. Like that, you have to check with bank. Okay, we'll we have 4 to 5 minutes more. IFSC bank person saying 0. IFSC or IDFC? Okay, but check with that bank, because they have some hidden charges as well, right? They can ask you that open this account scheme or open this account under this scheme, you will get 0 charges on issuance of BRC, but still they can charge on issuing of IRM against your NEFT payment. So might chances that they will charge you for creating IRM of the payment receipt. So please be clear about that, that there is nothing hidden charges in that, because there is a process involved to get the BRC. Like if you receive the payment in INR, so that bank needs to convert your INR into IRM, that first stage where bank will charge or bank can charge. And the second one is that issuance of BRC, that stage also bank can charge. And the last one is the closure of those shipping bills into EDPMS. Once BRC will get issued, then bank can close it into EDPMS. Freedom World account to luck every, yeah, that's why I'm telling you that they have different account schemes where you need to check all the conditions. Terms and conditions are there with the bank, so you need to get in details while you are opening your accounts, right? Okay, is there any other query? Okay guys, see you soon with different topic, and still one topic is left, and that one is that what if I lost all the shipping bills and transfer documents? There is no one who is taking this issue seriously, but you are doing great work, sir. Thank you. And if we send in CSV4 in person mode, our inventory to FBA, if it good, because we send in CSV5, we need to so much problems.
As per my understanding, CSV4 is for the gift purpose or personal use, and in that case, you don't need to get any payment. But since you are sending your goods to the Amazon, you will definitely get paid also. So in that case, for the time being, there is no issue. But in future, bank can ask you about that payment remittances, from where you are getting this payment, and now the submit the documents for this payment. At that time, you have to show that these are the payments you received from overseas. So that is the default, that is the not a legal route to make the commercial transaction, but peoples are making their shipment under CSV4 mode to to save their cost and to save themselves from this complexity of the issuance of BRC and EDPMS issue. But that is not a solution, because that is not a legal route, or that is not a valid route to make the commercial transaction. So I would not suggest it, but still there is a costing problem in CSV5, because people are not getting so much margin, but still they have to pay the amount to the bankers. Even bankers are facing problem, because I have so many friends at senior level in the banks. They are also facing problem, because they are huge manpower deployed in this work, and even they don't want to close these number of shipping bills, because the very small value and small amounts of shipping bills, and the number of shipping bills are very much, so they are not able to close it. Even they have submitted their proposals to the senior authority, or to the even RBI also. It is under consideration or under discussion. Definitely we will get some relaxation or some good notification, which will be in favor of e-commerce transactions, e-commerce exporters, right? As of now, whatever the notification came, those notifications are in favor of B2B transactions, or the for big exporters, the exporters who are directly sending the goods to the customers, not through marketplaces. I know a person who was doing e-commerce exports from 2002. E-commerce export from 2002. But recently Bank HDFC RBI notice came and asked for shipping bill closure per bill 1500 rupees, but not possible to close more than 30,000 bill. Yeah, these are the practical problems which even bankers are facing, even e-commerce exporters are facing, but there is no solution right now, because in India earlier all were doing the exports from directly they are making exports, right, through the like B2B transactions, or not through marketplaces. But nowadays these transactions are very much, and I think when banks issues the AD code, they did not guide to the exporter, e-commerce exporter, that what is the purpose of AD code, why you are getting it, what the consequences you will get once you use that AD code, because you are using AD code under CSV5. That's why those shipping will reflect into the EDPMS portal, and you are getting notice also to closure of the shipping bill. Even banks are facing, while they are trying to close those shipping bill, because they are facing issues in matching of the payments with the shipping bill, converting INR payment or NEFT payment to the IRM. So many legal consequences or legal problems there in the system of the bank. They don't have a sufficient or a valid system in the bank they can close easily to them. That's why they are facing, even banks are getting documents, but unable to close those shipping bills. To Saurav, sir, if I do Hong Kong LLC and use Hong Kong bank, okay. So in case of Hong Kong, as per my understanding, Hong Kong is, I think they are charging tax on the expense also. I'm not aware about sales tax there, but you need to check with the expenses part also. Because in Hong Kong, I'm working with a company which is based on Hong Kong, China, Singapore, USA, Canada, UK, and Dubai.
But as per my understanding, in Hong Kong, they have tax compliances on expense part also, and not aware about sales tax. I need to check on the Hong Kong part. Will definitely come back to you for payment. Then just make a one large payment to me. There is a 0% advertise if no Hong Kong. Okay, I need to check on the Hong Kong part, because I always try to not to share any fake information which I don't have. I will do research on that and will explain to it. Now मोहम्मद अनस, मेरी शिपमेंट 1 मंथ हो गया, BA में हो गया, अब मुझे कितने दिन में क्लोजर करना होगा शिपिंग बिल? देखो, शिपिंग बिल जनरेट हो गया तो आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर क्लोज करना होगा। बेसिक क्लोजर का मतलब ये है कि आपको पेमेंट आ जानी चाहिए 9 महीने के अंदर अंदर, और 9 महीने के अंदर अंदर आप वो पेमेंट का प्रूफ सबमिट कर दो बैंक को, और बैंक उसको फिर क्लोज कर देगा। एंड अ गुड क्वेश्चन सौरभ, हांगकॉन्ग, आई नीड टू check this. I am just making these videos for sharing my knowledge and just helping to the e-commerce exporters. क्या पता मेरी कुछ नॉलेज शेयर करने से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, अदरवाइज मेरी जो सर्विसेज है वो कम्प्लीटली अलग है। मैं यूएसए के सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ उनके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं काम करता हूँ। बट मैंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब किया है 8 से 9 साल, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, वही शेयर करता हूँ। नाउ पेमेंट तो शिपिंग जनरेट होने से पहले हमारे पास आ जाती है इन ई कॉमर्स। तो ये पेमेंट एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट हो गया ना, वो आपसे शिप पर्पस कोड भी पूछते होंगे, या फिर पर्पस कोड डालना होता होगा, P0103 सेलेक्ट करना होगा, तो आप उसको दिखा सकते हो कि ये एडवांस है, बाद में शिपमेंट हो रही है, ये अलाउड है, कोई इशू नहीं है। Because if this happened, all our problem will be solved as per what I have found. Yeah, might be. I need to check it. But in USA, opening LLC, it's not advisable, because in USA you will get more compliance issues of the sales tax. Because in most of the states, there you have to check the economic nexus. Like if you are crossing your 200 transaction limit, and you have to get registered with the sales tax department and filing those returns on monthly or quarterly basis. I think I tried my best to give the answers of those questions. And still, if any query left, then please. In Hong Kong, LLC is also non-pass-through. Non-pass-through, in case of non-pass-through, that LLC itself pay taxes, right? Because when pass-through status, then at that case, the real beneficiary will get taxed. So if I keep my profit there, do I pay in India? No. In India, basically in India, you are a ordinary resident, right? So in case of ordinary resident, you have to pay taxes on all over income, even in overseas also. So if you are making money there in LLC, so you have to keep it at very minimum level, that yes, this is the nominal profit. But in that case, even there is a double taxation, but you can get the foreign tax credit in India if you are paying any taxes on that. So if I don't, that you don't make money in the India, but that business will be managed from India, right? That effective management and control would be in India. In that case, you have to pay tax in India. What do you think, sir? Will the new seller gonna get trouble in closing their shipping bill, or new policy will come soon as India needs to more and more? Yeah. Even as of now, if you are doing
e-commerce transaction, then you will face this problem. But you will have 9 months, and in 9 months there is a high chances that some regulations and some notifications will come on that. But since last 6 months, this is the discussion part. Even in last 1 year, people are hoping for the good notification in favor of the e-commerce export. But as of now, nothing happened. They all are under discussion stage. But I suggest that definitely high chances that the notification will come soon. I know the senior level managers in government banks also and private banks also. They all are saying that yes, these are the under discussion, and many branch head, regional head persons wrote the letter to the RBI at a senior level. Hopefully, even through LinkedIn, I tag the request letter. I share a request letter and tag that Piyush Goyal also. I don't know when I did. I think last year I did. So so with the help of this channel, I'm able to share my knowledge, able to help some peoples. That's good. And I'm doing from 3 year, first year all as a gift, second and third year only. CSV 5. Right, CSV 5 mode is a legal route, valid route as per the law. And CSV 4, even you are writing that, yeah, that was as a gift. You can't accept money against the gift, right? So if you are getting payment, so high chances that you there's a chances to get notice to explain this money. And at that time you will say that I just use my Aadhaar card and did my CSV 4 shipment. So that will be a problem. When you are doing right thing, right, in that case you can fight. But when there is a some problem at our end, then we don't have such confidence that we can fight, right? मैंने गुड्स जीएसटी पे करके परचेज किया था सप्लायर से, अब एक्सपोर्ट कर चुका हूँ ई कॉमर्स के थ्रू. नाउ when we will apply for GST refund on my exported goods, I recommend you not to claim that GST refund, because in case of GST refund, if you are applying for GST refund, you will high chances that you can get refund. But if you don't get BRC in predefined period, right, then you have to surrender your GST refund with interest. So it's good until that BRC not issued, don't claim refund. People are claiming refund, even they will get notice from GST department also that why you are not showing that as BRC. You got the refund on basis of your export shipment. Where the payment proof? Because without BRC you can't show that these are the payment you have received. Only bank has authority to issue that payment proof, and that payment proof is the closure of the shipping bill in EDPMS. BRC is the payment proof, right? Okay, my friend is doing it in CS4 ship rocket, but how can he receive fund? Bank will again call him with. No, he is doing CSV4 shipment, right? And I think he was getting payment also. Yeah, bank can ask definitely, or bank can send a notice to him why you are getting fund. Even you are sending the goods on the on gift as a gift. Thank you. No, it's my pleasure that I'm able to share my knowledge and help you guys. Even this is not my practice area, but I just doing my research. I just keep continuing my research even after my I left my job last year, and this year I started my own practice. Last year I qualified my CA exam, and at that time I think that I should left my job and doing my own venture. So I just started, and we are on the same boat. You are also doing your business, and I'm also doing my business, but at a different
sector, a different area. Foreign input tax credit in e-commerce export. I have 1 lakh in, no, foreign input tax credit. Did not get. You have input tax credit. Thank you. You have input tax credit at GST portal, right? Not foreign input tax credit. You are talking about GST input tax credit. Yeah. Yes. So the again question that you have input tax credit and that in ITC input tax credit will not be used because you are making export shipment. In that case, you are eligible for refund, right? But I personally do not recommend to claim that refund until you will get the BRC, because in that case, if you got the refund from government, right, and you will not get the BRC at on time, then high chances you will get a notice from GST department to pay us back that refund you availed with the interest, and there is an interest of 18% on that. I'm saying to forget input tax. Yeah, yeah, you are right. Not forget until you don't get that BRC. Once you get the BRC, then you can claim refund, because you are very sure that government or you will not get notice in that case. For first time in live session, I'm getting so many questions and it's very interesting, because I'm not a YouTuber, so I don't have an idea how to get that live or online, and how my videos will get much views and get more reach. So I just started my camera and uploading the videos, whatever in my mind, and as of now, I uploaded more than 600 videos. I think related to small business owners, e-commerce shipments, accounting, taxation, and uploaded videos related to the subjects of the undergraduate students of the Delhi University. And showing you guys my cabin. So this is my office. Those areas for my team, and either here backside my farm manager. Thank you. More people are now concerned about shipping bill closures, so we are here. Yeah. Okay. Merry Christmas to all. Thank you. Thank you. And we'll come with new information. And if I'll get more comments on particular issue, then definitely we'll come live again and have some discussion. Okay, thank you. Thank you for asking the valid questions. And really, I'm very impressed that I'm getting a good questions, and I have tried my best to give the answers, and I hope I did well. I just tried. I'm not sure. Most welcome. My pleasure that I am able to give the answers of your questions, right? Okay, see you. Bye bye. Take care.